Hello and अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Corner Tigers second podcast. मैं हूं आपका host Munna and I am the owner of cornertigers.net forum. So आज के podcast का आगाज करते हैं with introductions of our guests. For the first time from the UK हमें join कर रहे हैं आज हमारे forum के दो बहुत ही मनचले और चुलबुले से members जिनका नाम है Fireworks 11 और मोहसिन. फायरवर्क्स का ओरिजिन लाहौर से है जबकि मोहसिन इज अ पिंडी बॉय. फिर बारी आती है हमारे दो पुराने पापियों की जिनसे आप पहले भी पॉडकास्ट में उनको आप सुन चुके हैं. उनका नाम है एहसन और प्रोफेसर. एहसन कराची से हैं जबकि प्रोफेसर साहब इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद. देन बारी आती है हमारे सिक्स्थ गेस्ट की आज. लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, ऑल द वे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर दिल अजीज हमारे फोरम के टाइगर नहीं बल्कि चीते मेंबर स्टार बॉय की. ही इज ओरिजिनली फ्रॉम कराची और at least he claims to be. चलिए जी, आज का पॉडकास्ट हमारा होने वाला है PSL 6 की राउंड 1 की गेम्स की. 6 गेम्स खेले गए इस PSL 6 में अभी तक और हम आज बात करेंगे अभी तक होने वाले एक्शन की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर कलंदर्स की. लाहौर कलंदर्स, इनके बारे में मैं सबसे पहले जो है दावा देना चाहूंगा हमारे मेंबर फायरवर्क्स को. फायरवर्क्स, अभी तक आपको क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? लाहौर कलंदर्स ने 2 मैच खेले. सरप्राइजिंगली उन्होंने जो है दोनों गेम्स जो है जीत ली हैं. यूजुअली ऐसा स्टार्ट उनका होता नहीं है. व्हाट डू यू थिंक कि अभी तक क्या अच्छा कर रहे हैं वो लोग? Yeah, hi everyone. I think Lahore have started off really well. Usually they always lose a couple of games Yeah. looking at their history. I think obviously they've won both their tosses, which has really helped because the sides that have chased, they've won all the matches. I'm not sure how they'll be doing when they need to put up a score, but we'll see when that happens. Mohamed Hafiz, he's been in brilliant form. You know, he's been not out in both the games. And another good thing going for Lahore at the moment is Fakhr Zaman has come out of his bad rut of form, and you know he really took the bowling apart the other day against Quetta. So I mean, Lahore's a very strong side, to be honest. If their batting clicks, because their bowling is already probably the strongest fast bowling attack of the tournament. You've got obviously Haris Rauf, Shaheen Afridi. They're really in form. He picked up 3 wickets against Peshawar, and Rashid Khan obviously was very economical. So everything has been going well for them at the moment, and I think it's just a matter of time. Where I think so far so good. They're going brimming with confidence, and looking forward to the next round of games. और ये सोहेल अख्तर के बारे में क्या बोलेंगे? इनका जो है ये ओपनिंग का जो अभी तक चल रही है परफॉर्मेंसेस, आपको लगता है कि शुड ही कंटिन्यू ओपनिंग द इनिंग्स विद फखर जमान? इज इट अ राइट डिसीजन? Yeah, I mean, like I said, he's had 2 failures at the top. I mean, his second one especially, he was struggling. Strike rate was under 100. But he is a hard-hitting batsman, and especially at the start of the order with the power play. So I can see why Lahore do send him at the top for a quick start. I think they can try him for maybe another game or 2. If he continues to fail, then they'll probably need to change. Salman Agha is more of a stylish stroke maker. He nudges the ball, takes up singles and doubles. So you've got Fakhr striking at the other end, so that might be a good option. Plus, it gives you that left and right hand combination. If he does strike at the top, it'll give him the confidence. So, but Lahore do have good backup options if Sohail Akhtar does flop in the next couple of games. मेरा ख्याल है कि जो है लाहौर ने परफॉर्मेंसेस तो अच्छी थी, लेकिन इनका जो है टूर्नामेंट से पहले एक जो बड़े मजे की इनकी जो एक न्यूज़ भी आई थी. अभी तक पता नहीं ये दबा गए हैं कि क्या चक्कर है. कोई कोविड टेस्ट पॉजिटिव किसी का जो आया था, ये अभी तक खबर पता चली नहीं है कि कौन है. दिलबर हुसैन की हैमस्ट्रिंग इंजरी का इन्होंने बोल के जो है उसको बाहर बिठा तो दिया, लेकिन अब पता नहीं कि जो है अल्लाह आलम क्या उसका जो है वो वाकई इंजरी असली थी कि कोई और रीजन था कि उसको जो है बाहर बिठा दिया गया है. उसके बाद मुझे लाहौर की जो है एक जो इशू सबसे बड़ा नजर आ रहा है वो है इनके सपोर्ट बॉलर्स. डेविड वीसे और अहमद दानियाल, समित पटेल को अभी तक बॉलिंग नहीं दी. ये कुछ कंसर्न है. आई थिंक हो सकता है लाहौर में जाके जो है थोड़ी इनकी जो परफॉर्मेंसेस अच्छी हो जाए. और सलमान आगा भाई ने 2 कैच छोड़ दिए क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज के. वो भी जो है बेचारा जो अंडर प्रेशर, उसने फिर बैटिंग भी कुछ नहीं खास, उसकी तो खैर बारी नहीं आई थी उस दिन, लेकिन अंडर प्रेशर रहने वाला है वो बेचारा अगले मैच तक. मुझे लग रहा है कि हो सकता है शायद ड्रॉप ही ना हो जाए, लेकिन आई होप आई एम रॉन्ग ऑन दैट. चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं. उसके बाद लाहौर के बाद जी बात करते हैं कराची किंग्स की.
दो मैच खेले, पहला बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जो है इजी चेस। दूसरा मैच हुआ इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से, अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस बट बॉलिंग में कुछ मार खा गए। एहसन, वर यू सेटिस्फाइड इनकी प्लेइंग 11 से? क्या लगता है, मतलब सही थी दोनों मैचेस में, क्या कहते हैं? नहीं, आई थिंक दे हैव टू मेक सम चेंजेस इन द प्लेइंग 11। पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जो परफॉर्मेंसेस रही हैं क्वेटा के अगेंस्ट, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, स्पेशली बॉलिंग काफी अच्छी की थी। अरशद ने मिडिल ओवर्स में काफी अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली एंड ही वाज वेरी हार्ड टू गेट अवे। और इमाद आल्सो बॉल्ड वेल। बाकी आमिर वाज वेरी इकोनॉमिकल, मतलब more or less everyone did their job well there. आमिर यामीन थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन दूसरे मैच में ये हुआ है कि अगेन आमिर यामीन का जो ओवर था वहीं पे मैच, आई थिंक से वहीं पे मैच खत्म ही हो गया था more or less। आमिर यामीन की मेरे ख्याल से तो जगह नहीं बन रही ना, उसकी बैटिंग की जरूरत पड़ रही है, और बॉलिंग में भी ही इज ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ अ लायबिलिटी क्योंकि उसकी पेस इतनी है नहीं। नबी का उसकी क्या जगह कहते हैं आप? लेके नबी नबी को जो इन्होंने सही यूज किया है दोनों गेम्स में, पहले में तो बॉलिंग दी नहीं, दूसरे में जो है बहुत लेट आए, लेकिन बॉल स्पिन हो रहा था, क्या बेहतर यूज कर सकता था इमाद उसको? डेफिनेटली आई थिंक नबी को काफी लेट लाए, पता नहीं इनफैक्ट आज भी प्लान था बॉलिंग करने का या नहीं, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे वसीम अकरम से कमेंटेटर्स, तो साइमन डोल ने बोला कि नबी से बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, तो वसीम अकरम कह रहा था दैट डिपेंड्स ऑन द कैप्टन। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ, उसके बाद हमने देखा नबी को बॉल दिया है, तो आई डोंट थिंक, पता नहीं प्लान था कब कराने का नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा कंट्रोल उसकी वजह से ही आया था, एंड ही इज ऑलवेज बीन अ गुड बॉलर, तो आई डोंट नो व्हाई पहले उससे बॉलिंग नहीं कराई गई। और ये वकास और अरशद सेटिस्फाइड सो फार? अरशद अगेन लास्ट ईयर भी इमर्जिंग खेला है, उसमें भी अच्छा था। इस ईयर अगेन ही इज डूइंग वेल, मिडिल ओवर्स में अच्छा कराता है, एंड ही टेक्स विकेट्स एंड ही इज आल्सो हार्ड टू गेट अवे। So I think they're underrated, but they're good options for Karachi. चलिए, थैंक यू सो मच एहसन। स्टार बॉय, आप क्या कहते हो? आप एग्री करते हो ये इमाद वसीम ने जो है पहले गेम में जो है 4 ओवर करवाया पूरे, नबी को बॉलिंग नहीं दी? आई मीन इज ही रियली द राइट गाय टू बॉल 4 ओवर्स एवरी गेम? क्या लगता है? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे लगता है कि इमाद की देयर वाज़ अ लॉट ऑफ टैक्टिकल एरर्स। पहली चीज़ को ये करनी चाहिए थी, स्पेशली आज की गेम के बारे में, कि ही शुड हैव बोल्ड द सेकंड ओवर। द थिंग इज़ कि अगर आप देखें तो बैट्समैन को, स्पिनर्स को थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, और जो पेसर्स थे जिस ग्राउंड में ज़रा सा टच करते थे एंड द बॉल वुड स्कोर टू द बाउंड्री। सो आई थिंक यहाँ पे एक टैक्टिकल एरर हुआ था उसके हिसाब से। एंड कमिंग टू नबी, आई थिंक ही शुड हैव बोल्ड नबी। आपने देखा कि statistics अगर उठा लें, everybody's talking about how the Pacers took most of the wickets, लेकिन आप देखें जो Pacers भी जो विकेट ले रहे हैं वो भी अपने स्लो डिलीवरी से ले रहे हैं, वो भी फिंगर स्पिन जब स्लो मारते हैं उससे होता है। तो it made sense कि नबी को बॉलिंग दें, उसके 4 ओवर करें, and he should have came in earlier। जैसे हसन ने पहले कहा था, जब तक कमेंटेटर्स ने अकरम को नहीं बोला और वो टाइम आउट नहीं हुआ, उस वक्त तक उन्होंने जो है उसको नहीं लेके आए, and you saw the difference। और आपको क्या लगता है ये इस्लामाबाद से जो गेम हारे हैं, इसमें कौन था, मतलब मैच का मुजरिम किसको बोलोगे आप? I think it was a bunch of tactical errors for sure. शुरू में थोड़ा deceleration हुई थी towards the end. We honestly, Karachi should have gone around 210, 215 to 220 at least. और वहाँ पर they slowed down a lot. और इस्लामाबाद का the difference was, अगर आप note करें, कि they took a lot of singles and converted a lot of doubles too. So it wasn't all about hitting. So, and they capitalized on the bad deliveries, but they took a lot of singles and doubles. तो मसला ये हुआ मेरे ख्याल से कि strategically bowlers अच्छी तरह use नहीं किए गए। Imad should have bowled the second over consecutively, और यमीन से I don't know क्या obsession है, but I think नबी को पहले introduce करवाना चाहिए था। आपको लगता है ये इनको अपनी प्लेइंग 11 में जो है कोई चेंजेस करने चाहिए? लाइक दानिश अजीज इनके पास हैं, इनके पास टॉप ऑर्डर बैट्समैन ईशान मलिक भी है, आमिर Um, यमीन की जगह पे ये किसी को ला सकते हैं इनमें से, या कासिम अकरम के भी इवन जो है एज अ सेकंड इमर्जिंग प्लेयर ये लोग खिला सकते हैं इतना बड़ा रिस्क लेके? honestly, कराची की bowling काफी set है। I think the only thing is कि यमीन की मुझे पता नहीं इनका, like I said earlier, obsession क्या है। I think they should drop him और दानिश अजीज को लेके आए, because as we know he's a really good finisher, और नया लड़का भी है। और ये है कि कराची की बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है और इससे स्ट्रेंथन और हो जाएगी। हिटिंग का भी हो जाएगा। नबी है, we can actually utilize नबी and use 4 of his overs।
तो आई थिंक कि यमीन को ड्रॉप करके और नबी को यूज़ करें पूरा और आई थिंक दानिश अजीज को लाना चाहिए लाइनअप में। इस्लामाबाद के बारे में बात करते हैं। 2 गेम्स खेले। पहला वाला थोड़ा जो इनका डॉजी इनकी बैटिंग लाइनअप बैटिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर भी किसी तरह जीत गए। सेकंड वाले में इनकी बॉलिंग बहुत बुरी रही, लेकिन कराची के अगेंस्ट इन्होंने जो चेज किया है, दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेटर चेजेस दैट वी हैव सीन इन पीएसएल हिस्ट्री। मोहसिन, आपको क्या पॉजिटिव पॉइंट्स जो है अभी तक नजर आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में? Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. Look, you've mentioned it yourself. Islamabad have been a team of two tails thus far. In the first game, the bowling was magnificent, the batting not so much. In the second game against Karachi, the bowling was absolutely pathetic, and the batting was, well, in part pathetic, but on the whole, magnificent. I think Islamabad's batting is probably the most explosive batting lineup of the entire PSL. When you've got the likes of Alex Hales at the top, Phil Salt, once he gets going, can really hurt the opposition. Shadab Khan as well, Fahim Ashraf, Asif Ali. Gregory showed what he could do in the Multan game, and the depth that they've got within that batting lineup, they're back quite literally from number 1 all the way down to number 11. And when you've got a team with that depth in the batting lineup and that strength within the batting lineup and the ability to chase down almost 200 runs, it definitely puts the opposition under pressure, probably before a bowl's even been bowled, once they've seen that batting lineup on the team sheet. Another thing, emphasising that depth, is the fact that they've still got Paul Sterling on the bench. Paul Sterling hasn't yet played a game, and the fact that he hasn't yet been utilised and they've still been able to chase down 200 runs just sends out warning signals to the rest of the teams for the rest of this PSL. At the same time, I think they've found a very interesting player in terms of Mohamed Wasim Jr., their emerging player. He showed in both games how much of a capable bowler he is. He's got a very mature head upon his shoulders. If he can continue developing, and we've not seen his batting yet, incidentally, but if he can continue to develop, I think Islamabad have found a gem in Mohamed Wasim Jr. So in both assets, be it in terms of the batting, be it in terms of their bowling, if they can ensure that they click together, I think Islamabad have an extremely strong, very deep in terms of depth squad, which can actually challenge for the title. अच्छा, ये शादाब खान क्या है, मतलब क्या क्या करना चाह रहे हैं भाई? बैटिंग में भी नहीं चल रहे, आज बॉलिंग में भी जो है इन्होंने जो कराची के अगेंस्ट इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जगह बनती है ये एज अ कैप्टन, मतलब Look, Shadab is a interesting one. We all know the potential of Shadab. Unfortunately, his bowling has regressed, and it's regressed quite a bit. However, his batting had come on quite a bit, especially during the last PSL when he was practically hitting 50s for fun. 2 games in, he hasn't done particularly well. His bowling's been incredibly poor. His batting hasn't delivered as it had done previously, but I think he's still got the potential to actually do well. As a captain, I've still got my question marks over him. I don't think he's someone who you can think about dropping. I don't think it's someone at this point in time whom you should think about whether he should be in the team. However, I think he's definitely got pressure upon him to actually start performing and start contributing to the Islamabad side. आप इत्तेफाक रखते हो ये मोहसिन ने जो अभी बात की है? I pretty much agree with everything Mohsin actually said. The only thing I would say, like, I do agree. I think Paul Sterling needs to come in, and they need to figure out their bowling too. Because Shadab's bowling is not working well. Even in the first match, he gave away like 33 runs, only took 1 wicket. Or Zafar Gohar ko bowling HD, he was pretty decent, I would say. So what I think is कि batting order में भी थोड़ा सा change आना है. Like इनकी batting is already good, but it can get better if they bring in Paul Sterling and maybe Alex Hills can come down to 3. इस तरह शादाब जो है वो number 4 पे आ जाएगा. और इससे क्या होगा कि इनको इन consolidator चाहिए. Right now everybody is a big hitter. आज तो अच्छा कर गए, but how often can they actually repeat this performance? अच्छा, ये फिल सॉल्ट एज एन ओपनर दोनों गेम्स में जो है फेल हुआ है, रोहिल नजीर की जगह बनती हुई नजर आ रही है ये, क्योंकि उसने वार्म अप में बहुत जबरदस्त जो है हिटिंग की थी. लगता है कि ये रोहिल नजीर को लेंगे? Yeah, it was kind of weird कि उसको नहीं खिलाया था, to be honest with you. लेकिन the thing is like अभी सिर्फ 2 गेम में हुई हैं और कराची की bowling काफी अच्छी थी, so it's kind of rough to kind of drop anybody as of right now. Maybe एक और गेम try कर लें. Or I think the change in like position, like I mentioned earlier, is going to help a lot too. मोहसिन, प्लेइंग 11 एक्सेप्टेबल है अभी तक, या आपको लगता है आगे जाके ये कुछ चेंज करेंगे?
The playing 11 is quite interesting, actually. I think we definitely need to change it up a little bit. It absolutely astounds me as to why Paul Sterling hasn't yet played a game. Starboy obviously mentioned Rohel Nazir. I think Rohel is actually within the same mode of Hussein Dalit in terms of accumulating runs and not being a particularly big hitter. And if you are playing Hussein Dalit, I don't see any need for Rohel to actually come into the side. If Shadab is going to be bowling his 4 overs, then I question whether Gohar should be in the side, and I could actually suggest that perhaps Gohar could be dropped and Sterling could be brought in as that fourth overseas player. But as it is, Islamabad have played two games and they've won both games in the end. So do you change a side that's winning? Perhaps not. अब आगे बात करते हैं एक ऐसी टीम की जिसके बारे में हमारे प्रोफेसर साहब ने पिछले पॉडकास्ट में जो है कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स दिए थे, उनसे जो है शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर साहब, पेशावर एक गेम जीता, पहली गेम में ऐसा लगा कि भाई इनका सीजन शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। कैसी लगी अभी तक? ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है कि बुरी है? आपके कमेंट्स प्लीज। Mixed performance. I think they did better than my expectations, especially in second game. But even in the game one, they recovered well after a horrible start and took the game till the end. उनके टॉप ऑर्डर में इशू हैं, जैसे फर्स्ट गेम में ये नज़र भी आया। कामरान अकमल फॉर्म में नहीं है, ये सीज़न खेले नहीं है। इमाम को मैंने कभी भी एज अ T20 प्लेयर रेट नहीं किया। बहुत ज़्यादा ये हेविली रिलाई कर रहे हैं हैदर के ऊपर टॉप ऑर्डर में। वो इशू नज़र आया, इनके 4 आउट हो गए थे। नीचे से बुपारा ने आके थोड़ा सा इनको 50 की और थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाया। सेकंड मैच में मैं इनकी बैटिंग से ज़्यादा कि मुल्तान ने बॉलिंग बहुत बुरी की। आपने हैदर की बात की कि हैदर जो है टॉप ऑर्डर में रिलाई करें, लेकिन सेकंड मैच में तो उसने जो है नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में आके जो उसने वो छक्के वक्के मार के जो मैच जिताया। ये आपको लगता है कि जो आप ये हैदर अली का जो अभी तक जो कैरियर ग्राफ चल रहा है, ये उमर अकमल के जो है तर्ज अमल पे तो नहीं ये जा रहे कहीं? क्या कहते हैं आप? नहीं, हैदर अली इज मच बेटर। आपने सेकंड मैच में देखा भी होगा कि उसने अक्रॉस कोई हॉइक्स जो होते हैं, अगली हॉइक्स जिस तरह उमर अकमल मारता था मिड विकेट के ऊपर से हर शॉट, हैदर के आप 6 उठा के देखें, एक उसने स्ट्रेट मारा है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा है, तो स्ट्रेट शॉट्स मार रहा है, स्लॉगिंग नहीं कर रहा अक्रॉस द लाइन। हैदर से आप अभी इस स्टेज पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर मैच में जाके परफॉर्म कर देगा और आपको मैच जितवा के दे देगा। वो बाबर आजम नहीं है अभी। अच्छा, आप क्या बोलते हो भाई? पिछली जो है पॉडकास्ट में जो है आपकी और मेरी थोड़ी हल्की फुल्की सी जो है बहस हुई थी वहाब रियाज के बारे में। अब ये जो अभी इन्होंने माशाल्लाह 50 रन खाए हैं आखिरी दूसरे मैच में, इसके बाद जो है अब एग्री करते हो कि ये फेंटा वेंटा खाने के जो है मतलब प्रोन है? नहीं, आप वहाब के पीएसएल के स्टैट्स उठा के देख। वहाब हैज ऑलवेज बीन अ बीस्ट इन पीएसएल। एक आध मैच में किसी को भी पड़ जाती है, ऐसा इशू नहीं है। वहाब की पेस अभी भी है, अगर उसकी पेस ड्रॉप हुई होती तो मैं आपसे एग्री करता। यॉर्कर वो अभी भी कर रहा है, तो वहाब भी उनका मेन बॉलर है पेशावर। मोहसिन, आप क्या कहते हो कि इनकी बॉलिंग अभी तक जो है काम नहीं कर रही? व्हाट्स रॉन्ग विद द बॉलिंग लाइनअप? I think they've got an extremely good bowler in Wahab Riaz. Wahab Riaz is a Dr. Jekyll and Hyde type bowler. One day he can be magnificent, and the next day he can go for over 50 runs, like we saw the other day. One thing I would say is that they found a very good bowler in their emerging player, Mohamed Imran. He bowled magnificent yesterday. I think he went for like 24 runs and he got a wicket as well. And that showed great maturity in terms of match situation, considering the likes of Wahab and Mujib were getting smacked. I think they've been expecting a lot more than has been given to them from Mujib. He hasn't been doing particularly well. Granted, the pitches in Karachi haven't been particularly conducive to spin, but you would expect him to do a lot better. I think they did pretty decently in the Lahore game, considering the amount of runs they were actually defending. And if luck went their way towards the end, they could have actually won that game. But I think it's time to give them a little bit more time. मैं बॉलिंग किस लिए बार बार जो है इनका क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि जो है इन्होंने वहाब रियाज ने दोनों गेम्स में जो है इनकी इकॉनमी जो है काफ़ी बुरी रही थी। देन मोहम्मद इरफान को इन्होंने जो है दूसरे गेम में खिलाया था, उन्होंने भी कोई खास जो है इकॉनमी के साथ जो है बॉलिंग नहीं कराई। सो इनके अटैक में जो है इनका जो मेन अटैक है उसमें इश्यूज हैं। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? क्या इनके पास आगे चल के क्या ऑप्शंस हैं? Look, I've no doubt that they have issues in terms of their bowling, but at the same time, even we saw with Irfan, he actually started off pretty well. His first 2 overs were very decent. It was just towards the end, once Multan had built that momentum where he started getting hit,
Wahab Riaz, I would disagree with you. Yeah, I think he bowled pretty decently in that opening game. He picked up a wicket. He bowled a magnificent delivery to Ben Dunk, one of the best Yorkers I've seen in PSL. And if he gets going, I think Peshawar will be in a very, very good position. ये रिक्रूटमेंट की आपने बात की है बीजेपी प्लेयर्स की, ये जो है इन्होंने इनका ड्राफ्ट हमने पहले भी जो है डिस्कस किया था कि इनका ड्राफ्ट में इनकी जो है रिक्रूटमेंट्स इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जावेद अफरीदी जो है आजकल जो है मैं देख रहा हूँ सारी जो है जितनी भी दुनिया जहान की जो है फेमस सेलिब्रिटीज जो फीमेल्स हैं वो रिक्रूट कर करके जो है मैचों में ला रही हैं। ये चक्कर क्या है, मतलब क्या चाह रही हैं? Look, I've personally got no issue in recruiting beautiful women, and if Javed Afridi wants to go about that way, then all the power to him. Look, I can see where the criticism is coming from the Peshawar Zalmi supporters. I can understand their frustration. However, I think they've got to understand that these teams aren't just teams; they're businesses as well. Javed Afridi has to try and ensure that this franchise actually builds for the future. At the same time, Javed Afridi has to realize at the same time that if he is going to build a successful team, he has to recruit young talent, and doing so will only help in building his own franchise at the end of the day. So if he can actually concentrate a lot more on the draft for next season, I think that would be a lot better. I mean, looking and talking to Zalmi supporters, all I've heard is disappointment. All I've heard is patience running out. And if the same situation is seen next season as it has been seen this season in terms of concentrating more on famous celebrities, then I think there could be some trouble within the franchise itself. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं मुल्तान के बारे में। मुल्तान ने जो है दोनों मैचेस खेले, दोनों में जो है बॉलिंग की वजह से मुझे लगता है कि जो है हार गए हैं ये। प्रोफेसर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि जो है मुल्तान सुल्तान जो है क्या गलती कर रहे हैं, मतलब कहाँ इनकी जो है प्रॉब्लम चल रही है? मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट से पहले ही मैंने बोला था कि ये बहुत रिलाई कर रहे हैं अपने स्पिन अटैक पे। आपने देखा होगा कराची में और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में इनके साथ बैड लक ये भी रही है कि दोनों टॉस आ रहे हैं। सेकंड इनिंग्स में बॉल स्पिन हो भी नहीं रहा, थोड़ा सा ड्यू का इशू है। फास्ट बॉलर पेस टैग इनका बहुत वीक है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे सोहेल तनवीर के ऊपर, लेकिन अब मेरे ख्याल से उनकी एज कुछ ज़्यादा ही हो गई है। क्रिसलियन दोनों गेम्स में वो भी ओपन करके जो है वो भी कुछ नहीं अभी तक इम्पैक्ट उनका जो है रहा है पीएसएल के ऊपर। क्रिसलिन तो इसी तरह रहेगा, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं, कंसिस्टेंसी आप क्रिसलिन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक दिन वो आपको मैच जितवा देगा अकेले ही, अगले दिन वो बहुत फजूल सी शॉट मार के आउट हो जाएगा पहले ही ओवर में। अच्छा, ये शाहनवाज धानी के बारे में कैसा इंप्रेशन रहा आपका? एक गेम खेला है, उसने बहुत मुझे अच्छा जो है। बहुत इम्प्रेस किया उसने मुझे। मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 135 किलोमीटर की रेंज का बॉलर होगा, लेकिन उसने 145 टच किया है। बहुत उसकी टेस्ट मैच लेंथ है। टी20s में शायद वो इतना अच्छा ना परफॉर्म कर सके जैसे उसने डेथ में ओवर भी किया था, हैदर ने उसे बहुत मारा था। यॉर्कर मेरे ख्याल से अभी इतने नहीं वो अच्छे हिट कर सकता, उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है। उसने फर्स्ट क्लास सीजन अच्छा खेला है, लेकिन टेस्ट मैच लेंथ पे वो बॉल करता है। टेस्ट लेंथ है उसकी, पेस है, हाइट अच्छी है, बाउंस है, स्किडी बॉलर है। चलो फायरवर्क्स आप बताएं, आप अभी तक मुल्तान की कैप्टनसी आपने जो है देखी मोहम्मद रिजवान की, could he have done anything different in both the games that they lost? Yeah, I mean, I think the first game was quite unlucky. I thought they would beat Islamabad quite comfortably towards the end, but Sohail Tanveer just had a shocker, bowling really bad full tosses, short stuff, and he went for about 19, 20 runs in the over, and that cost him the match. And in the second match, I think his mistake was bringing Afridi on in the power play. Now, Afridi, look at his age; he's about 40 odd now. He doesn't have the guile, the weapon and armory to trouble the batsman compared to, say, Usman Qadir. I think he should probably have brought on Usman Qadir if you are to bring the spinner in the power play. Afridi needs protection in the deep. He needs fielders. So I think that was his mistake. And also, I've noticed with him, when the wheels start to come off, he's totally opposite to Safraz. He just puts his head down. Even Afridi was giving the team talk when the team came out to field. So he just needs to put himself out there a bit more. I know he's a great batsman, but he just needs to put himself out there and try and speak to his bowlers a bit more. अच्छा, ये सोहेल तनवीर, ये जो T20 फ्रेंचाइज का एक लेजेंडरी बॉलर, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस इस आदमी को है, what is going wrong with him in this PSL in 2 games? Do you think that he's going to
survive like this and retain his place in the 11? And what is he doing wrong? Yeah, I think with anything, especially in fast bowling, it's all down to confidence, and his confidence is totally shattered after the first game. And like Professor Saab was saying, he's aged now, and he doesn't have the same energy, the pace even to trouble the batsman. It's very one-dimensional type of bowling action. I mean, on the bench, they've got Sohail Khan, who's also obviously a similar type of bowler, but he's a bit more a better hitter. So if they are going to drop, say, Brathwaite and bring in Tahir, then they might play Sohail Khan and go with just 3 spinners because the matches are moving to Lahore. So they could try that, because right now Sohail Tanvir is doing everything wrong. Maybe he can have a bit of a break, and they need a bit of a change, to be honest. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 गेम्स खेले, दोनों में जो बुरी तरह से हारे। पहला गेम कराची के अगेंस्ट बहुत बुरी जो है इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस। दूसरी गेम में जो है इन्होंने बॉलिंग में काफ़ी इनको जो है प्रॉब्लम हुई। बैटिंग फिर भी इन्होंने अच्छी की थी, लेकिन बॉलिंग में जो है बॉलर्स टोटली लेट सरफराज डाउन। एहसन, सबसे पहले तो जो पहली गेम से स्टार्ट करते हैं, सही मूव थी सरफराज की ओपन करना उस दिन पहली गेम में अगेंस्ट कराची? सरफराज को ओपन करना, आई डोंट थिंक दैट वाज हिज बेस्ट पोजीशन, एंड आई थिंक कुछ लोग कह रहे थे कि ही इज इनसिक्योर ऑफ रिजवान, इसलिए वो ओपनिंग करने आया। आई डोंट थिंक दैट इज द केस, लेकिन ऑब्वियसली ये तो होता है कि ही वाज कैप्टन और अब इसको टीम में जगह नहीं बन रही, तो ही डेफिनेटली वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट इन दिस PSL, so I think that is definitely affecting him a little bit. So he's trying all sorts of things. पहले मैच में इसने ओपनिंग की, दैट डिडंट वर्क। सेकंड मैच में आई थिंक अपनी पोजीशन पे आया, एंड बहुत डेस्परेट लग रहा था इन द फील्ड इन द सेकंड गेम। आई मीन उसकी क्रिटिसिज्म भी बहुत हुई है, द वे ही वाज शाउटिंग एट ऑल द बॉलर्स। योर थॉट्स अबाउट साइम अयूब, ये जो इमर्जिंग इनका बैट्समैन है? आई थिंक साइम का रेपुटेशन यही है कि मतलब टेस्ट के लिए वो अच्छा प्लेयर होगा, इसकी टेक्निक अच्छी है, वो क्लासी शॉट्स मारता है। एज अ पावर हिटर इसको कभी नहीं देखा गया, तो इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइजिंग पिक। Definitely Saim either has to raise his game or they have to try a way to fit Arish into the combination. और ये पहली गेम में नसीम को खिलाया, बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। ही स्टार्टेड ऑफ रियली वेरी वेल अलोंग विद हसनैन। दूसरी गेम में उसको ड्रॉप कर दिया और लेकर आए तो अनवर अली को। ये मूव सही थी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नसीम जो है वो थोड़ा पिटा भी था पहले गेम में, बट एक गेम के बाद ड्रॉप करना आई डोंट थिंक इसका बनता था। इट्स नॉट गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस ईदर। और मतलब सही, अगर कोई स्पेशलिस्ट बॉलर आता है उसकी जगह तो समझ आती, बट अनवर अली he's always been hit or miss as a bowler, और आई थिंक वो अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे। आफ्टर द कराची गेम उनकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चली थी उस गेम में, बट अगेन व्हेन दे डिड दैट, दे डिड इट एट द एक्सपेंस ऑफ देयर बॉलिंग। कैप्टनसी के बारे में जो है मैं सरफराज की जो है यही बोलूंगा कि देखें, एक होता है कि जो है योर टीम इज एज गुड एज द कैप्टन। अब अगर जो है कैप्टन जो है एक तो डेस्परेट मेजर्स जो है ले रहा है विद हिज ओन बैटिंग पोजीशन, उसके बाद दूसरी गेम में जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली, मतलब क्रिस गेल जैसा जो है बड़ा प्लेयर वो ड्रेसिंग रूम में आपके है, आपके पास जो है मोइन खान जैसा जो है एक्सपीरियंस क्रिकेटर, जो कि खुद एक बहुत बड़ा बहुत एग्रेसिव जो है कैप्टन हुआ करता था अपने ज़माने में, वो भी जो है बहुत चीखा वगैरह मारा करता था। उस जैसा बंदा भी जो है फील्ड पे आके आपको जो है काम डाउन कर रहा है, आपको जो है क्रिस गेल भी आके आपको जो है काम डाउन कर रहा है। मतलब ये आप क्या इंप्रेशन जो है छोड़ रहे हो? आप जो है पहली बॉल पे आप साइम अयूब के ऊपर जो चीखा मारना शुरू हो गए हो। ये आप अब टीम का मोराल कैसे लेके चल रहे हो? ठीक है, आप एग्रेसिव कैप्टन हो, आपने जो अभी जो है अपना बयान दिया है कि आप एक एग्रेसिव कैप्टन हो, बट देन इट डजंट जस्टिफाई शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग एट योर ओन प्लेयर्स। आप जो है एक पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे हो यार, आपके जो है ये आप क्या एक्सप्रेशन जो है छोड़ रहे हो? एक तो जो है आपकी पर्सनैलिटी जो है इफेक्ट हो रही है, आपकी अपनी गेम इफेक्ट होने लगी हुई है, उसके बाद जो है आप क्या जो है मतलब क्रिस गेल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो बेचारा जो है जब बैटिंग करके आउट होके गया तो ही रेज्ड हिज हैंड, ही वाज चीयरिंग अप टू द क्राउड, बट देन उस वो जो है अब जब गेम हारा हो गया तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि जो है जब वो किया होगा ड्रेसिंग रूम में और जो है सरफराज जो है वो सड़ी हुए अपने जो मुंह के साथ आया होगा, तो मतलब द गाय इज डिपार्टिंग फ्रॉम द कंट्री, एटलीस्ट उसको जो है आप क्या किस किस इंप्रेशन के साथ जो है आप उसको जो है अपने मुंह से जो है विदा करोगे? मुझे जो सरफराज से एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई।
दूसरा मुझे जो है ये समझ आती है टॉम बेंटन को जो इन्होंने जो है दोनों गेम्स में जो खिलाया है, मतलब जो है उससे अच्छा जो है वो बंटे खेल ले, जैसा उसका नाम है बेंटन, वो यार ये जो है पिछले पीएसएल में भी फ्लॉप हुआ, अब दोबारा से जो है मतलब दोनों गेम्स में जो है फ्लॉप हो गया है। अब देखते हैं अगर जो उसको दोबारा से जो ये लोग रिटेन करते हैं आगे, बट चांसेस जो है मुझे कम ही लग रहे हैं। ऊपर से जो है आप अपनी आपकी इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, मैंने जो है पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि आपकी सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, एंड आई स्टिल एक्चुअली वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दैट बिलीफ, बट शिनवारी और अनवर अली को साथ में आप खिला रहे हो, वो बेचारा कैस अहमद जो है आपने उसको पहली गेम में खिलाया, उसके बाद उसने उसको आपने जो है ड्रॉप कर दिया, उसको ऐसी पूरी फेंटी पड़ी। अब मुझे नहीं लगता आगे चल के जो है खैर कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो है कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। सरफराज रियली उसको जो है बहुत काम करना पड़ेगा इस टीम के ऊपर, अगर उसको जो है कोई अच्छी जो है आगे परफॉर्मेंस इस टीम से चाहिए। He definitely has to calm down and पहले खुद calm down करेगा फिर सही से लीड कर सकेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ गेम्स। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राउंड 2 की गेम्स के बारे में। सेकंड राउंड गेम्स भी जो है कराची में ही खेली जाएंगी, तो क्या लगता है आगे के चांसेस? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फायरवर्क्स से। फायरवर्क्स आपकी होम टीम लाहौर, लगता है आप मोमेंटम कंटिन्यू रखेगी लाहौर? I think Lahore is in great form at the moment, and they'll continue their momentum. To be honest, Hafiz, when he's in this form, he can take on any bowler, and he's the backbone of the side. And they're facing Multan next, so Multan are low on confidence. Their fast bowling is a wreck at the moment, and I expect Lahore to win, even if they have to bat first. To be honest, I would back Lahore's bowling to be the first side to be able to win a match by batting first. So I'm looking forward to their next game. The game against Karachi will be more tight. I think that will be 50-50. It will be a very close game. It could go either way, but regardless, Lahore versus Karachi in Karachi, that's a sight for sore eyes. So I'm looking forward to that. Yeah. थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं हम कराची के ही बारे में। कराची किंग्स, लोकल बॉय, वहाँ के स्टार बॉय फ्रॉम यूएस, आपको क्या लगता है कि इस जो ये इस्लामाबाद से जो गेम हारे हैं, इसके बाद जो है आपको लगता है कि जो है आगे कोई चेंजेस करेंगे एंड देन they'll come back stronger? I think we shouldn't panic just yet. Second ही game थी, there's a lot to learn, और next game थोड़ी tough होंगी, but obviously थोड़े शायद कुछ changes करने होंगे, but anything they do is going to be positive. और next game is against Lahore, so it should be a good contest. लेकिन हम सबको पता है कराची की team best है, बाबर आजम is the best batsman ever, और मोहम्मद आमिर तो world class है. So on that note, I'll hand it over to you. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स स्टारबॉय। कराची के बारे में आगे चलते हैं। मोहसिन, व्हाट डू यू थिंक? इस्लामाबाद यूनाइटेड चांद पे चढ़ गया भाई, वो अब कंटिन्यू करेंगे अपनी परफॉर्मेंस? Look, I think Islamabad have a wonderful opportunity to continue their momentum. The next two games are against Quetta and Peshawar, and those are two definitely winnable games. And if they can somehow just accommodate Paul Sterling at the top of the innings and just make the bowling click, I think we can come out of this with 4 wins out of 4. That was short and sweet. Thank you so much, मोहसिन। अब आगे बात करते हैं हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में। एहसन, आपको क्या लगता है कोयटा ग्लैडिएटर्स, इनका कुछ पलड़ा जो है भारी आएगा इस बार, या ये वही रोना धोना इनका चलता रहेगा? देखें, I think they have to find the right combination between batting and bowling. So somehow they have to find the combination जिसमें batting भी अच्छी हो, bowling भी अच्छी हो. I think one thing that's hurting them is Ben Cutting की bowling form इतनी अच्छी नहीं रही अभी तक. So maybe Dale Steyn would come in. Faf du Plessis आया तो maybe he would strengthen their batting a little bit as well. बाकी they have the option to go for Delport, and Delport भी मतलब can contribute a few overs with the ball. जब कराची के लिए उसने खेला था last year, he actually did not so bad with the ball. So maybe they could consider him as an all-rounder option as well. चले ठीक है, थैंक यू सो मच एहसन फॉर योर कमेंट्स। प्रोफेसर साहब, आप बताएं सर, ये क्या लगता है पेशावर ज़ल्मी, ये जो है इनका आगे क्या जो है तर्ज अमल रहेगा आने वाले मैचेस में? पेशावर का जो मुझे मसला नजर आ रहा है कि अभी वो सिर्फ एक स्पिनर खिला रहे हैं। शुरू के मैचेस में पिच फ्रेश थी, ग्रास थी, पेसर्स को ये हेल्प कर रही थी। मुजीब इनके पास खाली एक स्पिनर है, वो भी पावर प्ले में बॉल करता है। इनके पास मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए कोई स्पिनर है नहीं, तो आई थिंक, और बेंच पे भी इनके एक सिर्फ अब्रार है जो कि इमर्जिंग प्लेयर है, अगर ये उसको खिलाते हैं तो ड्रॉप किसको करेंगे? ये इशू मुझे पेशावर का नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर इनका स्ट्रांग हो जाएगा मिलर के आने से, लेकिन उसमें भी फिर इन्हें किसी रदरफोर्ड को या तो ड्रॉप करना पड़ेगा या साकिब महमूद को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब साकिब महमूद को ड्रॉप करते हैं तो पेसर
मे बी इनके पास कोई बैकअप ऑप्शन इतना अच्छा है नहीं। तो पेशावर के मुझे इश्यूज नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने टूर्नामेंट के स्टार्ट में भी कहा था। अच्छा, मैं अब मुल्तान सुल्तान्स की जो है आगे जो है बात कर लेता हूँ। मुल्तान सुल्तान्स का जो है आगे इनकी जो गेम्स आने वाली हैं, मुझे लगता है कि इनको जो अपनी बॉलिंग इनको जो है कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा। इनको सुहेल तनवीर को ड्रॉप करके जो है उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी। और इनको जो है बैटिंग में भी इनको जो है कुछ जो है इम्प्रूवमेंट्स जो करने की जो है ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बॉलिंग में भी हमने देखा है कि जो है उस्मान कादर जो है वो उन्होंने लास्ट गेम में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पहली गेम में उनको नहीं खिलाया था। इमरान ताहिर अभी जो है बाहर बेंच पे बैठे हुए हैं। शाहिद अफरीदी उनको पावर प्ले में जो है ओवर दिया था और उसके बाद जो उन्होंने भी थोड़ी मार खाई। तो बॉलिंग में और आई थिंक कैप्टनसी में रिजवान को जो है थोड़ा सा जो है अपनी स्ट्रेटजीज जो है थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेंगी। लेकिन जो है आने वाले वक्त में जो है देखते हैं कैसा रहता है। मुल्तान सुल्तान्स इज़ अ वेरी गुड टीम, सो आई थिंक दे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग बेटर। और इसके साथ जी हम आज का पॉडकास्ट जो है रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर गेस्ट्स, फायरवर्क्स 11, मोहसिन, स्टारबॉय, एहसन एंड प्रोफेसर। ज़िंदगी रही तो दोबारा बात होगी। हमें हमारे जो है फोरम cornertigers.net पे प्लीज़ ज़रूर जो है विजिट कीजिएगा, साइन अप करें, डिस्कशंस में जो है पार्ट लें। बहुत सारा बेंटर, बहुत सारी गेम्स हम वहाँ खेलते हैं और साथ में जो है दुनिया जहान की क्रिकेट की और स्पोर्ट्स की जो है गपशप वहाँ लगाते हैं। बहुत मज़ा आता है। आप भी जो है प्लीज़ ज्वाइन करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें और साथ में यूट्यूब पे प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस पॉडकास्ट को देखते हुए। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। मैं हूँ मुन्ना, आपका आज का होस्ट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम cornertigers.net। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।